तो रेपिस्ट के बच्चे को कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, ये ट्रायल के एंड तक होना चाहिए कि सिर्फ टर्मिनेशन तक? स्लॉटर हाउस बना रखा है क्या लोगों ने हाई कोर्ट को? आओ प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराओ, वहां पे हॉस्टाइल हो जाओ, क्लेमिंग दैट नो रेप वाज कमिटेड। ये प्रॉब्लम है सर। When you have come to the court for killing an unborn baby on the ground that he or she belongs to a rapist, तो फिर उसके बाद सोशल टैबूज के नाम पे, कॉम्प्रोमाइज के नाम के ऊपर फिर आप क्यों कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था? क्लियर कट मैसेज है, हॉस्टाइल हुए, हमने कंटेम्प्ट में जेल भेजा। वी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ किलिंग द बेबीज, दैट इज ऑल। इफ यू आर अ विक्टिम यू मस्ट गेट द रिलीफ, बट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इफ यू से दैट नथिंग हैड हैपेंड टू मी, आपको शायद दुनिया बचा लेगी, हमसे कोई नहीं बचा पाए। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू किल द बेबीज। Now, sir, you have seen the report. 29 weeks not permitted as the mental condition of the victim is of age of 6 years now. And she can't take care of herself in these circumstances. Looking to that peculiar circumstances, the termination was permitted. But the law was discussed in detail. क्या करोगे सर, आप बताओ ना। सर्जिकल इंटरवेंशन से हो सकता है, लेकिन मेंटल कंडीशन और देयर हैज टू बी मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस एज पर पैरा 14 of Suchitra's judgment. Para 14 deals with that fact. The explanation to section 3, however, also contemplate termination of pregnancy when the same is the result of a rape or a failure of birth control methods, since both of these eventualities have been equated with the grave injury to the mental health of a woman. Collaborate किया था, रिपोर्ट को collaborate ये किया था, उसमें एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये आई थी कि वो जो लड़की है, although she is 26 or 27 months, but her mental condition is of 6 years. 6 years. Right. And even cannot, she herself is required to be maintained by their parents. So एक और प्रॉब्लम है, लोगों को सुधरने की आदत नहीं है। पूछिए कैसे सर। एक केस में हमने टर्मिनेशन का ऑर्डर किया, उसके बाद बेल लगी, उसमें पेरेंट्स का नो ऑब्जेक्शन लगा हुआ। मैंने कहा बूचर खाना बना रखा है कोर्ट को क्या, यहाँ से टर्मिनेट कराओ और वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लो। अब आपको लड़की माइनर नहीं दिख रही है, तब उसको मेंटल ट्रॉमा नहीं दिख रहा है। एक तो ग्वालियर में हुआ, उनको तो उठा के कंटेंट में अंदर कर दिया। यहाँ पे इन्होंने अभी हॉस्टाइल नहीं हुए थे, हमने कहा छोड़ो अभी कुछ नहीं करते। बकायदा एप्लीकेशन में लिखा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, इसको जमानत दे दी जाए। और पिटीशन में आके रोना रोते हैं, शी इज कैरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ अ रेपिस्ट। कि वो रेपिस्ट के बच्चे को कैरी नहीं कर रहे हैं। तो रेपिस्ट के बच्चे को कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, ये ट्रायल के एंड तक होना चाहिए कि सिर्फ टर्मिनेशन तक? स्लॉटर हाउस बना रखा है क्या लोगों ने हाई कोर्ट को? आओ प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराओ, वहां पे हॉस्टाइल हो जाओ, क्लेमिंग दैट नो रेप वाज कमिटेड। ये प्रॉब्लम है सर। But in this case, they are not. अरे सर ये भी होने वाला है, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी। उसके कई रीजंस हैं, सोशल टैबूज हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं। मैं किसी को मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ कि हम लड़ेंगे तो वो समाज क्या बोलेगा, शादी प्रॉब्लम हो जाएगी, छुपाने की कोशिश होगी, दुनिया भर की चीजें होंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल। बट व्हेन यू हैव कम टू द कोर्ट फॉर किलिंग एन अनबॉर्न बेबी ऑन द ग्राउंड दैट ही और शी बिलोंग्स टू अ रेपिस्ट, तो फिर उसके बाद सोशल टैबूज के नाम पे, कॉम्प्रोमाइज के नाम के ऊपर फिर आप क्यों कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था? जब कुछ नहीं हुआ था तो फिर यहाँ कैसे आ गए थे? इसलिए हम तो पूरा कह रहे हैं कि भैया हॉस्टाइल हुए तो फिर देखना। पर क्या करें सर, यहाँ पे इन्होंने भी मना कर दिया है। सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन रिपोर्ट में है। हाँ तो फिर आप अंडरटेकिंग दीजिए कि कुछ भी हो जाएगा तो आप जिम्मेदार हैं। I will ask. नहीं, आस्क का क्या करना है? ना तो आप कंपनसेशन मांगेंगे, ना आप किसी के खिलाफ मुकदमा करेंगे, ना आप शासन से कंपनसेशन मांगेंगे, और ना ही आप हॉस्टाइल होंगे, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर कट मैसेज है, हॉस्टाइल हुए, हमने कंटेम्प्ट में जेल भेजा। वी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ किलिंग द बेबीज, दैट इज ऑल। इफ यू आर अ विक्टिम यू मस्ट गेट द रिलीफ, बट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इफ यू से दैट नथिंग हैड हैपेंड टू मी, आपको शायद दुनिया बचा लेगी, हमसे कोई नहीं बचा पाए। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू किल द बेबीज। Now, sir, you have seen the report. What can be done now? I will file affidavit, my lord, regarding the undertaking Hmm? of the mother. क्या एफिडेविट देंगे सर? No claim, no compensation, and regarding hostile. ठीक है, दीजिए एफिडेविट। पूछ लेता हूँ, file. पूछ के बताइए, फिर वैसा ऑर्डर करेंगे, है ना? We are ready to file affidavits. क्या एफिडेविट देंगे? Because my lord, no claim
and no compensation and they are dead. तो कुछ अगर हो जाएगा तो कुछ हो जाए और होस्टाइल नहीं होगी मैम, बेल के ऊपर नो ऑब्जेक्शन नहीं नहीं है, नहीं होगी इस बात का। वो एफिडेविट एफिडेविट देंगे कि नहीं देंगे? तैयार। देने को तैयार है। 5610/2024 the report of medical board Sagar has been received in a sealed cover in which it is mentioned that since the pregnancy is of more than 24 weeks, therefore the board is not competent to give its opinion, and since the pregnancy has crossed 24 weeks, therefore surgical intervention may be required. In nutshell, the board has refused to give any opinion as to whether the medical termination of pregnancy of the prosecutrix would be safe or not. However, the counsel for the petitioner submits that the parents of the prosecutrix are ready to give an affidavit that since the prosecutrix is carrying a child of a rapist, therefore they are ready to face all the consequences in case if anything happens to the prosecutrix during the DNC. It is further submitted that neither they will claim any compensation or would seek any criminal action against the doctors performing performing the operation, but they would not claim any compensation from the state also. It is further submitted that the parents of the prosecutrix are ready to give an undertaking that since the prosecutrix is carrying a pregnancy of a rapist, therefore they would not turn hostile before the trial court, and they will stick to their version that the prosecutrix was subjected to rape, and since the prosecutrix is minor, therefore it has also been stated that the parents of the prosecutrix are ready to give such undertaking on her behalf also. Next, so far as the submission made by counsel for petitioner that the parents of the prosecutrix are also ready to give an undertaking on behalf of the prosecutrix is concerned, the same can be accepted for the reason that if the prosecutrix has agreed for termination of her pregnancy on the ground that she is carrying the child of a rapist, then she would also not turn hostile. It is further submitted that in case if the parents of the prosecutrix turns hostile before the trial court, thereby claiming that the prosecutrix was never subjected to rape, then they can be punished for committing contempt of the court. Considering the submissions made by counsel for the petitioner, this court is of the considered opinion that before considering the facts of the case any further, an opportunity can be granted to the parents of the prosecutrix to file an affidavit. Accordingly, as spread list on person. इसको ध्यान से लगा दीजिएगा, उसको ऊपर टेप लगा दीजिएगा ताकि वो बंद हो जाए।